Assalamu alaikum students. Here is your English teacher Miss Navita Ijaz. I hope you all will be fine and quite safe at home. Students, as you know very well that our school is closed due to coronavirus. That's why we have started our study through online classes to avail your time positively. Students, let's move toward the book. This is our third edition. This is our book of English, third edition, New Oxford Modern English, book 8 for level 8 or grade 8 by Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. Students, let's move toward the first unit of this book. The first unit or the starter of this book is a poem, When I Heard the Learned Astronomer. First of all, this is written. I shall talk about the poet who composed this poem. The title of the poem is When I Heard the Learned Astronomer. The poet of this poem is Walt Whitman. You can see the name of the poet here. Walt Whitman is one of the most influential American poets. He worked as a journalist, a teacher, and a government clerk. This poem is taken from his major work, Leaves of Grass. He is known as the father of free verse. Yes, the most important thing that, first of all, the first thing about the poet is that he is an influential American poet. And the second thing is this: he is known as a father of free verse. Father of free verse. What is the meaning of this word? Father of free verse. In verse का मतलब क्या है? Free verse. Verse is a line of poetry. A line of poetry is called verse. Poetry की एक line को verse कहते हैं. And if the lines of the poetry are free of rhyme scheme and meters, then it is called free verse. ठीक है? अगर उसमें राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें सिलेबल्स को यानी कि वर्ड्स को मेंटेन और उसका बैलेंस नहीं रखा जाता, उसके मीटर्स को और फोर्स को चेक नहीं किया जाता, तो वो फ्री वर्स कहलाती है. ठीक है ना? फ्री वर्स इज़ फ्री ऑफ राइम एंड मीटर्स. So students, let's move toward our first lesson, When I Heard the Learned Astronomer. First of all, I shall discuss with you that from the title we get the idea that we are going to discuss about a very well qualified and highly educated and highly qualified astronomer who will talk about stars, and because he is an astronomer, he will talk about stars, moon and planets, and he will show before us the beauty, the charm and attraction of celestial bodies, and we shall enjoy it a lot. For this, let's move toward the first activity. Words to know means words meaning. The first word is astronomer, students. The first word is astronomer. A scientist who studies stars, moons, planets and other objects in space is called an astronomer. The second word is learned, which means is well educated, highly qualified, usually written as learned and pronounced with two syllables, learned. यानी इसको written लिखने में आता है learned, Learned, but we pronounce this word as learned. Here it is pronounced as one syllable to reflect an ordinary person's way of speaking. एक ordinary person's का way of speaking जो होता है ना, जैसे learned उसने बोल दिया, इस तरह हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे. Lectured क्या होता है? Lecture. A lecture is a talk or presentation on a subject matter. एक subject matter पे जो आप टॉक करते हो या उसको जिस वे में प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड योर लेक्चर. व्हाट इज लेक्चर रूम? लेक्चर रूम क्या होता है? ठीक है, टॉक्स बाय एक्सपर्ट ऑन अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट इन पब्लिक रूम इज कॉल्ड लेक्चर रूम.
मिस्टिकल क्या होता है? हैविंग फैसिनेशन, हैविंग और इंस्पायरिंग ऑफ और फैसिनेशन. We shall use the words having fascination for this meaning. Proofs are evidence, students. Evidence that a mathematical equation is true. But proofs के लिए word use किया जाता है evidence का. ठीक है? Let's move towards the reading. When I heard the learned astronomer. No, we shall use the word learned. When I heard the learned astronomer. When the proofs, the figures were arranged in columns before me, when I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them, when I sitting here heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room, how soon unaccountable I became tired and sick. Till rising and gliding out, I wandered off by myself in the mystical moist night air, and from time to time looked up in the perfect silence at the stars. Yes, students, this is our poem. First of all, underline the new words and write their meanings. ठीक है? This poem, students, according to me, this poem is divided in two parts. This poem consists of one stanza. Each stanza is poem के अंदर, ठीक है? And in one stanza, there are two types of behavior of the poets or the listener. Of the poet or the listener. Listener, poet खुद ही listener है ना यहाँ पर, ठीक है? एंड ही इज़ द स्पीकर एज वेल. वही खुद सुन रहा है एस्ट्रोनॉमर का लेक्चर, और वही खुद उस लेक्चर को हमारे साथ डिस्कस कर रहा है. जब वो उसको सुन रहा है ही इज़ लिसनर, जब वो हमें बता रहा है ही इज़ द स्पीकर. ठीक है? यहाँ पर हमारा लिसनर जो है या स्पीकर जो है उसके टू मोड्स, टू बिहेवियर डिस्कस किए गए हैं इन वन स्टैंजा. द फर्स्ट 4 लाइन कंसिस्ट ऑफ वन बिहेवियर ऑफ one type of behavior, and the last 4 lines consist of the second type of behavior. We shall also discuss the behavior of the listener or a student or a speaker, ठीक है, from the poem. We get the idea. We shall also get the idea that may have what type of knowledge he got from this lecture. We shall see that does he enjoy it, how much this lecture add to his knowledge. Let's move towards the explanation and understanding of this poem. When I heard the learned astronomer, जब मैंने एक बहुत ही वेल एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉमर के लेक्चर को सुना. व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर अरेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी. जब उसने प्रूफ्स और फिगर्स मीन होता है नंबर्स, प्रूफ्स होता है एविडेंस को, वो अरेंज्ड मीन अरेंज किया इन कॉलम्स में बिफोर मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी. जब उसने एविडेंस को नंबर्स में और कॉलम्स में मेरे सामने जो है अरेंज किया. When I was shown the charts and diagrams, जब उसने मुझे चीज़ों के चार्ट्स एंड डायग्राम्स हम सबको दिखाए, टू ऐड, डिवाइड एंड मेजर दैम, उसमें ऐड करके, डिवाइड करके और उनकी मेजरमेंट करके हमें दिखाई उनकी फिजिकल बॉडीज़ की. ठीक है? When I sitting heard the astronomer, जब मैं वहाँ पर बैठा एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा था, where he lectured with much applause में होता है with much appreciation, जहाँ पर सुनने वाले लोग जो है उसके लेक्चर को सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे उसको, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको सराह रहे थे. इन द लेक्चर रूम, हाउ सून अनअकाउंटेबल मीन होता है वेरी मच, यानी इम्पॉसिबल. हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक. ठीक है? हाउ सून, इतनी जल्द, बहुत ही जल्द मैं वहाँ पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा थक गया, और सिक मीन वहाँ पर मैंने बहुत फील किया. यानी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द लिसनर और फॉर द स्पीकर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन. ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड. ही केम हियर to listen about stars, planets, moon and
to enjoy the beauty and attraction of these celestial bodies, but these are presented before the speaker or before the poet in different ways, in charts and in columns, ठीक है, till rising and gliding, ठीक है, he get up from here, वो वहाँ से उठता है, and gliding and move out, ठीक है, and wandered off by myself. बाय माई सेल्फ मीन्स होता है अलोन, और अकेला ही बाहर वहाँ पर घूमने बाहर चला जाता है, ठीक है ना. इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट ईयर, मॉइस्ट मीन होता है कूल, इन द ये डैम, ये वेट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है. इन द मिस्टिकल, इन द फैसिनेटेड कूल नाइट ईयर, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक्ड अप इन द परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही लुक्ड एट द perfect silence of the stars. When he came perfect silence at the stars, when he came out from the lecture room, he came out, and in the cool night air, in the existence and in the presence of the stars and moon, he automatically started to enjoy it, ठीक है. Students, first half में जो है, the poet or the speaker is in the lecture room, and in the first 4 lines he is in the lecture room, and the last 4 lines he is out of the lecture room. Through reading we get the idea that the speaker's experience is totally against to his expectations, ठीक है. There are 2 halves in the one stanza. First half consists on the first 4 lines, ठीक है. In the first half, the speaker is in the lecture room, he is listening the astronomer. He is using the astronomer using totally rigid scientific language as charts, columns, add, divide and measurement, ठीक है. Measurement of the stars, moons and planets, ठीक है. He talks about their physical bodies. वो वहाँ पर हमारा स्पीकर या हमारा स्टूडेंट कुछ और सुनने के लिए गया था, कुछ इंजॉय करने के लिए गया था, लेकिन वो वहाँ पर बात करते हैं उनकी फ़िज़िकल बॉडीज़ के बारे में, उनके बेसिक फंक्शन के बारे में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है. और उसके डिस्टेंस के बारे में मेजरमेंट करके बताता है, कुछ ऐड करता है, कुछ डिवाइड करता है, चार्ट्स और कॉलम्स के ज़रिए उनको शो करता है उनके सामने, ठीक है ना. एंड द ऑडियंस इज़ अप्रिशिएटिंग है, ऑडियंस तो उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही है फर्स्ट हाफ में, ठीक है ना, बिकॉज वो उन सेलेस्टियल बॉडीज़ के एविडेंस को प्रूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना. उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा है, प्रूव कर रहा है, वो प्रूफ दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में. एंड द ऑडियंस इज अप्रिशिएटिंग द पोएट, ठीक है ना, सॉरी अप्रिशिएटिंग द एस्ट्रोनॉमर, ठीक है ना. ही इज बट आवर पोएट इज़ नॉट फीलिंग गुड, आवर स्पीकर इज़ नॉट फीलिंग गुड, ठीक है. ही इज़ फीलिंग बोर विदाउट द एक्चुअल एग्जिस्टेंस. वो इसलिए बोर फील करता है बिकॉज उसकी जिसके बारे में वो सुनने गया है उनकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस के बगैर उसके बारे में बात हो रही है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं एक बच्चे को हम लोग लें और उसके साथ बात करें कि बेटा एक लैंड फीचर्स के बारे में, एक पहाड़ होता है, ठीक है ना, पहाड़ जो है दैट इज़ राइजिंग अबव, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लैंड बट इट राइजेज अबव फ्रॉम द लैंड. ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है. कितना ये ऊपर उठता है, कितना ये ऊपर तक चला जाता है, इसकी हाइट क्या होती है, मैं उसको नंबर्स में बताऊँ, ठीक है, मेजरमेंट करके बताऊँ, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे ये इफेक्ट करता है, इसकी फिजिकल बॉडी क्या होती है, तो आई थिंक ही कांट अंडरस्टैंड इट. वो बच्चा इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है ना. लेकिन अगर उसी बच्चे को, यानी कि मैं पहाड़ की फिजिकल बॉडी के बारे में बता रही हूँ, उसकी माउंटेन की फिजिकल बॉडी, उसकी मेजरमेंट के बारे में बता रही हूँ, उसके इफेक्ट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना, कि क्या इसके इफेक्ट्स हैं ऑन द लैंड एंड द अदर फिजिकल फीचर्स, सॉरी लैंड फीचर्स. लेकिन अगर मैं उसी बच्चे को वहाँ से लेकर किसी माउंटेन के सामने ले जाकर खड़ा कर दूँ और कहूँ दिस इज़ द माउंटेन, ठीक है, दिस इज़ द लैंड फीचर विच इज़ राइजेज हाई अबव द लैंड एंड दिस इज इट्स हाइट, ठीक है, ये इसकी हाइट है, एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग अबाउट माउंटेन एंड दिस इज़ द अफेक्ट ऑफ द माउंटेन. आई थिंक ही कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ठीक है, वो मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करेगा बिकॉज द माउंटेन इन एक्चुअल फॉर्म इज इन फ्रंट ऑफ हिम. एक्चुअल फॉर्म में वो उसके सामने होगा, ठीक है ना. बट हियर आर पोर्ट कुडंट अंडरस्टैंड एंड कुडंट इंजॉय इट, ठीक है. जब वो मून के बारे में बात कर रहे हैं, द मून इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है,
उसके सामने नहीं है, और उसने जो उसके बारे में वो बात कर रहा है उसके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि इसकी फिज़िकल बॉडी कैसी है, कैसे इसके ऊपर जो है वो कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे चीज़ें जो है वो ब्लोन अप उठती हैं, ठीक है, उनको कैसे वो जो है उसकी वो वहाँ पर स्टे नहीं कर पाती, ठीक है, या फिर प्लैनेट्स का एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है मेजरमेंट करके बताता है डिफरेंट, ठीक है, वे में वो जो उसको डिस्क्राइब करता है। द पोएट डजंट एंजॉय इट, दिस ऑल वाज बोरिंग फॉर हिम, ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा बोर लगती हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, ही एक्चुअली वांटेड टू से दैट देयर शुड बी, बट वो सेकेंड हाफ में तो उठ के वहाँ से बाहर चला जाता है ना, ठीक है ना। ही राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट एंड वॉन्डर्ड ऑफ बाय सेल्फ बिकॉज ही इज़ बोर्ड, वो वहाँ पर बोर हो जाता है और अलोन वहाँ से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता कहाँ पर है, इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट ईयर में, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही लुक्ड एट द परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स, और वो स्टार्स की तरफ देखता है। एक्चुअल और बेसिक चीज़ जो पोइट हमसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहता है वो ये है कि ही वॉन्टेड टू से दैट लर्निंग शुड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। द पोइट हाईलाइट्स द पॉइंट दैट लर्निंग अगेंस्ट एक्सपीरियंस, हम लर्निंग की तरफ तो जाते हैं बट एक्सपीरियंस में बच्चे को माइक्रोस्कोप के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चे को माइक्रोस्कोप नहीं दिखाते, ठीक है। अगर हम उस माइक्रोस्कोप को सामने रख के बच्चे से उसके बारे में बात करें, ही कैन बेटर अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट, दिस इज़ द मैसेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है। द पोइट वॉन्ट्स टू डिस्कस दिस पॉइंट दैट देयर शुड बी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, लर्निंग, बट हियर he discussed that learning is against experience, means if I am talking about stars and the astronomer is talking about star, it is his responsibility to present in the stars and planets or the pictures of these things in front of the students, ठीक है ना। यानी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो बच्चे को वो एक्चुअल में दिखा भी देनी चाहिए और प्रैक्टिकल करवा भी देना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास मैसेज तो इस पोएम का ही है कि बच्चा सुनी हुई बात को भूल भी जाता है, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में वो खुद परफॉर्म कर लेता है या जो चीज़ उसके सामने होती है वो इसको नहीं भूलता, ठीक है ना। लर्निंग अगेंस्ट नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ द पोएट इन दिस पोएम, ठीक है ना। दिस इज़ अ थीम एंड सेंट्रल आइडिया। So when he went out of the lecture room in the most night among the stars, moon and planets, he feels easy and refreshed, ठीक है। I hope you all will understand the explanation of this poem कि these are the two paragraphs, these are the two changes, these are the two behaviors discussed, these are the two modes discussed in this poem, ठीक है। In the first half he is in the lecture room and in the second half he is out of the lecture room. Why he is not enjoying the lecture, ठीक है, because the actual things are not in front of him, ठीक है। Why he is bored, ठीक है, because he actually wants to experience these things, ठीक है। He actually wants to see these things, and after experiencing it, he can understand it and he can enjoy the lecture as well, ठीक है।